Good morning, students. This is the last topic of our first chapter and introduction to political theory. And the topic is why should we study political theory? The question is why should we study political theory? We may have political ideas, but do we need to study political theory? Being a student, क्या हमें political theory पढ़ने की जरूरत है? Now the question is it not more suitable for politicians to practice politics? क्या पॉलिटिकल थ्योरी की ज्यादा जरूरत पॉलिटिशियंस को नहीं है जिनको कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, और फॉर ब्यूरोक्रेट्स टू मेक पॉलिसीज, लाइक फॉर द ब्यूरोक्रेट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हु मेक पॉलिसीज फॉर अस, और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, और फिर उन टीचर्स के लिए ज्यादा जरूरत है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी टीच करते हैं, और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड laws. Now the question is, what do we high school student gain by knowing the meaning of freedom and equality? Now the question is, being a high school student, why political theory is relevant for the students? So first of all, political theory is relevant for all the above target groups. As high school students, we may choose one of the above professions in the future, and so indirectly it is relevant for us even now. So today we are student, but in future we will become bureaucrat, lawyer, judge. हम आगे जाके इन्हीं में से कोई ना कोई प्रोफेशन जो है हम चूज करेंगे. So we can say that political theory, the study of political theory is relevant for us. The second, we are all going to be citizens entitled to vote and decide other issues. Like, as according to universal adult franchisee, when you attain the age of 18 years, you will get the right to vote. आपको क्या मिल जाएगा 18 साल के बाद? Right to vote. And to act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of political ideas and institutions that shape the world we live in. So to act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in, so that you can use your right to vote, उसको अच्छे से यूज कर सकें. सो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, मीन्स हर सिटीजन को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट व्हाट पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस. As a citizens, we are a bit like the audience in a music concert. So there is an example. इस example से हम समझने की कोशिश करते हैं. Like, as a citizen, we are a bit like the audience in a music concert. Suppose we are sitting in a music concert. We are not the main performers interpreting the song and melody. Yes, I agree. We are not the main performer. Who is the performer? The musician is the performer. हम main performer नहीं हैं, but we set the agendas and appreciate the output and put a new request. But same with the political theory. Like, we are not the main performers. Who are the main performers? The politicians, the leaders are the main performer. But being a vigilant citizen, what we can do, we can make a difference between right and wrong. What we can do, we can appreciate the policies of the government, and equally we can criticize the policies of the government. But when we can do it, हम कब कर सकते हैं ये चीज? जब हमें नॉलेज होगी किसकी? बेसिक पॉलिटिकल आइडियाज और इंस्टीट्यूशन की. सेम इफ वी आर ऑडियंस इन ए म्यूजिक कंसर्ट और हमें म्यूजिक की कोई नॉलेज ही नहीं है, लाइक वी आर नॉट फ्रॉम द म्यूजिक, हमें म्यूजिक की कोई नॉलेज नहीं है, तो हम ना ही तो किसी म्यूजिशियन की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर सकते और ना ही उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द म्यूजिक. Same with the politics. If we don't have basic knowledge about our institutions and basic political things, we cannot criticize or appreciate the policies of the government. So क्या होना चाहिए? हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें विजिलेंट सिटीजन होना चाहिए,
Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? एक म्यूजिशियन कब अच्छे से परफॉर्म करेगा? तब उसको पता होगा कि मुझे सुनने वाले जो हैं दे हैव नॉलेज अबाउट द म्यूजिक, उनको म्यूजिक की नॉलेज है. इन द सेम मैनर एक पॉलिटिशियन और एक लीडर कब बेटर परफॉर्म करेगा? तब उसको पता होगा कि मुझे चूज करने वाले, मुझे इलेक्ट करने वाले विजिलेंट सिटीजन्स हैं, दे हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द political issues. So also an educated and vigilant citizenry make those who play politics more public spirited. So we can say that the educated and vigilant citizens, so educated citizens and जो vigilant citizens हैं, they can make pressure, they can appreciate and they can criticize the policies of the government. Thirdly, freedom, equality, and secularism are not abstract issues in our lives. We daily encounter discrimination of various sorts in families, schools, colleges, shopping malls, and so on. So these ideas, freedom, equality, secularism, they are not the abstract issues. In our daily life, हमें इनसे बहुत बार बार encounter होता है हमारा. We also have prejudices against people who are different from us, be they of different caste or religion or gender or class. Even we ourselves have prejudices against people who are different caste. Like in our society, we can easily recognize the people from the different caste, different religions. और कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में हमारे भी कुछ ना कुछ मतलब जो different caste हैं, prejudices हैं उनके लिए. If we feel oppressed, we want it redressed, and if that is delayed, we feel violent. A revolution is justified. So here is this point. Just try to understand this point. If we feel oppressed, we want to redress, and if that is delayed, we feel violent. A revolution is justified. Let's try to understand with an example. एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. Suppose you are standing in a queue. आप किसी क्यू में खड़े हुए हैं, कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में या बैंक में, you are standing in a queue and if someone jumped the queue, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, किसी ने क्यू को जंप करके वो आपसे आगे पहुंच गया, तो आपको क्या होगा? You feel चीटेड. आप चीटेड फील करेंगे कि आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू और मेरे पीछे से कोई एक पर्सन है वो आया और वो अपना काम करवा के चला गया, और आप क्या फील करेंगे? ऑप्रेस्ड फील करेंगे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. हम इक्वालिटी की बार बार बात करते हैं और किसी ने क्यू को जंप किया और यू विल फील ऑप्रेस्ड. और अगर उसके जस्टिस में डिले हो जाता है तो हम कहते हैं कि वी फेल वायलेंट रिवोल्यूशन इज जस्टिफाइड. अगर हमारे राइट्स को रोका जाता है या कुछ करते हैं तो हम वायलेंट रिवोल्यूशन को भी जस्टिफाइड कर देते हैं कि भाई ये हमारा राइट है, ऐसे कैसे कोई पीछे से क्यू में जंप कर सकता है. ऑल दिस. अब देन टेक द सेकंड एग्जांपल. इफ वी आर प्रिविलेज्ड, वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन. अब इसको हम दूसरी साइड से ही देखते हैं. अगेन यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन अ बैंक एंड द बैंक मैनेजर जिसके साथ आपको डील करना है वो आपका कोई फ्रेंड है. उसने आपको क्यू में खड़े हुए देखा एंड ही कॉल्ड यू, उसने आपको बुला लिया एंड यू ऑल्सो जंप द क्यू. आप क्यू को जंप करके डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास जो कि मैनेजर है बैंक में वहां चले गए और आपने अपना काम करवा लिया. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम that there is no operation, we deny that there is no operation. अब यहां पर हम नहीं कहते कि हमने कोई ऑपरेशन हुआ है. सो दिस इज इक्वली ट्रू. सो विद द एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट. जब किसी ने क्यू को जंप किया देन वी फील ऑप्रेस्ड, और जब हमने खुद से उस क्यू को जंप कर दिया तो हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं. What political theory encourages us to do is examine our ideas and feeling about political things. Just by looking at the more carefully, we become moderate in our ideas and feelings. So finally, as student, we enjoy debate and elections, competitions. We have opinions about what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or
or not. So in the debate in school and colleges, we have opinion about what is right and wrong. We have opinions just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not. लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, वो रीजनेबल हैं या नहीं हैं. So finally, political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of common interest. So finally, why political theory is important? Because political theory exposes us to systematic thinking on justice and equality so that we can think systematically on the issues like justice and equality. Like in the last slide, if we discuss about these two topics, we feel oppressed and we are privileged. If we think systematically, तो हम क्या करेंगे? जब हम कोई क्यू को जंप करेगा, हम उसको भी अपोज करेंगे, और जब हम खुद किसी क्यू को जंप करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट justiciable. So this is the final slide. Political theory exposes us to systematic thinking on justice and equality so that we can polish our opinion and argue in an informed manner and for the sake of the common interest. So we have completed our first chapter from the political theory and introduction to political theory. So watch the video, make your notes in your notebooks, and in the next lecture I will send you the PPT. Go through the PPT also. Thank you, students.